शिगरी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है इसरार? जी सर, आवाज आ रही है सर। चले, वी स्टार्ट विद द क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मेरा आज प्लान तो था नहीं का, लेकिन जो हालात है उसमें 1-2 दिन के लिए हमने डिले कर दिया ड्यू टू दी ट्रैवलिंग डिफिकल्टीज बाय रोड। तो मेरे ख्याल में पहले हम जरा क्लास में देख ले कौन कौन आया है। काइंडली क्लास में इस वक्त कौन कौन अवेलेबल है? हाँ जी, क्या नाम है इनके, जरा अपना नाम बताएं। सर ऐसी चलिए सर। ठीक है सर। और कौन है क्लास में? चलिए अकबर दीदार सर, थैंक यू। ठीक है। और कौन है? तो वी हैव अराउंड 6 or 7 पीपल इन द क्लास। चले, लेट्स होप के थोड़ी देर में बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जस्ट 2-3 क्वेश्चंस मैं क्लास के सामने रखता हूँ। व्हाट वी मीन बाय डिसीजन मेकिंग? व्हाट इज मेंट बाय डिसीजन मेकिंग? फैसला करना, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? Anybody in the class who can answer to this small question? What we mean when we say we want to make a decision? What is a decision? जी, anyone in the class who can comment? थोड़ा क्लास को इंटरेक्टिव रखेंगे, जाहिर है ये ऑनलाइन क्लासेस के चैलेंजेस अपनी जगह। मैंने वैसे रिकॉर्डिंग पे डाला है। I'll share the recording at the end of the class. What we mean by decision making? Anyone in the class who can comment? What is decision making? जरा आप पोडियम पे आ जाइए प्लीज। हाँ जी, व्हाट इज मेंट बाय डिसीजन मेकिंग? सर, जी जी। being a manager or an executive, sir, during planning phase or execution phase, taking a decision, facing to कोई ऐसी चीज सर जो उसके एग्जीक्यूशन या फेज में कोई चैलेंज उसको फेस कर, उसके ऊपर वो कोई अपना माइंड को यूज करके उसको विद इन द फ्रेमवर्क को कोई डिसीजन ले लेता है उसकी सोल्यूशन के लिए। दैट मे बी गुड। सर डिसीजन मेकिंग तो आप इन एन इन यू, ऑर्गेनाइजेशन। यस थैंक यू वेरी मच। You have mentioned 3 things. The first thing is that there is a problem and there is a solution. So when we want to solve a problem, any problem in our life or in our projects, we try to solve these problems, and while solving these problems, we take some decisions. Anyone else in the class? हाँ जी, क्लास में आप जरा इस तरफ तवज्जो करें। Anyone in the class who can further aid to this statement? इसको further aid करे, what we mean by decision making? हाँ जी, he has mentioned 2 fundamental things सर that इसमें डिसीजन प्रोसेस है मेरे आइडिया में। एक जी जी सर ये डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है सर, किसी भी प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई करना, फिर उसी के रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करना, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव या गोल है सर उस तक पहुंचने के लिए जो राइट स्टेप लेना, ये डिसीजन मेकिंग। गुड। तो इन्होंने थोड़ा एड किया within the first definition that there are some objectives while we are having some problems and we want to solve these problems. We have some objectives. Then we try to explore the possible solutions, and then we finally take the decision. Anyone else? बात मतलब कुछ आसान हो गई। Anyone else who would like to aid to this
that there is a problem, there is a subjective, there are some possible solutions, and there is a decision to select the best solution. Anyone else who would like to aid? आप बात करें. सर उसमें जब जी सर कोई भी आप जब डिसीजन लेते हैं तो उसमें आप प्रोज एंड कॉन्स को एवेलुएट करते हैं. जी क्या जी इसके फवायद होंगे और क्या इसके नुकसानात. आप उस बेस के ऊपर आप एवेलुएट करते हैं, वेटेज देते हैं अपने डिसीजंस को, और जो भी बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन होती है उसको आप चूज करते हैं. वेरी गुड. So you have to, अब आपकी जबान को मैं थोड़ा सा, आपके जुमलों को मैं थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जुमले बनाऊंगा, and that I have already requested all the class that we always use the project. In your opinion, for each decision there might be some benefit and there might be some costs. The benefits is the positive things and the cost is the negative things. And certainly we will evaluate both the benefits and cost, and we will select the best available opportunity. I take a problem before all of you. The problem is the energy crisis in Gilgit-Baltistan. This is a problem. A problem should be separated from symptom. Symptom ye hai, the people are having strikes, they come on road when there is no electricity for more than 18 hours. There are sometimes line order situations due to this problem, but all these are symptoms of the problem. The main problem is the non-availability of the reliable, consistent source of energy. So what can be the solutions? Solutions आप थोड़ा सा, और context हम जो देख रहे हैं, that is Gilgit-Baltistan. Gilgit-Baltistan is quite different context. Number one, it is a bordering region with the 3 or 4 countries. There is highly sensitive issues we witnessed today. So the context of Gilgit-Baltistan might be different from the context of Punjab or Islamabad. So the first thing is that we understand the context. The second is we understand the problem. What is the problem? The problem is that there is energy crisis. ये kindly ये जो points है ये लिख ले. This is just an example. We would like to deliberate on this in the class, and this can be a good example also. Now the problem is that due to non-availability of consistent and reliable energy sources or resources, the people of Gilgit-Baltistan are facing continued and long power outages and load sheddings. And then these problems are leading to a lot of unrest, line order situations, and things like that. Now, so we have identified the problem. The second is, what are the available options? Available options. Available options क्या है जी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? जी जी हाँ जी. If you come on the podium, anyone who would like to aid, we are now trying to identify the options to solve this problem. There might be more than one options. Gee, what are the options? सर इसमें तो मेन जो ऑप्शन है सर, क्राइसिस को मतलब जो एक आपके पास अवेलेबल जो जनरेशन है उसकी प्रॉपर मतलब ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी लॉसेस को रिड्यूस करना तो ये है कि आप कहते हैं कि जी हाइड्रो पावर आपके पास एक ऑप्शन है, दैट वी गो फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, माइक्रो हाइड्रो पावर. और क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है? आपने कहा कि रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस, ये भी एक ऑप्शन है. एक आपने कहा कि सर ये जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं है सर, जो ग्रिड स्टेशन का जो ऑप्शन है सर, तमाम जितने रिसोर्स जो अवेलेबल है सर नालों के अंदर है और वो आइसोलेटेड फॉर्म में, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है. और प्रॉपर इसकी आप जो सर बिलिंग का जो सिस्टम है, स्मार्ट मीटर्स का जो ऑप्शन है, इसको मतलब इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है ताकि विद इन जो आपके पास अवेलेबल है उसको स्ट्रीमलाइन की जा सकती है. हाँ, तो रीजनल ग्रिड को हम डेवलप करें so that any surplus power from one hydro power system can be shifted to the other part, and maybe sometime we have surplus in one region and that can be utilized. So the regional grid, आपने कहा कि
power losses को हम reduce करें, distribution system को improve करें, and then you also discussed about the new hydropower projects. There can be other options like आपने smart grid की भी बात की, that there must be smart grid systems which can integrate the power, all these power generating units. And there can be many other options like we can go for solar energy solutions. We can install a solar grid, and maybe sometime we can wind. So all these are the probable and possible solutions to address the problem. So the next, we would not be able to avail all these solutions because all these solutions have their own benefits and costs. So the next step would be evaluate the available opportunity. Evaluate the available opportunities. Now the opportunities we have are the solutions we have may be having its own pros and cons, as mentioned by one of the colleagues here. And certainly we would like to see that what can be the cost and benefit of each available option. Sometimes the option may be very feasible, but we may not be having the funds to exercise this option. So this can be another challenge. We may need billions of rupees for a solar grid. For example, the solar grid can be a very successful experiment in Karakoram University to solve the energy crisis because we have a large tract of land. But the problem is that we need at least for a 500 kVA, we need 1 billion rupees. So it's a huge money. But I'm looking for some sponsor on a lease model or a cost sharing model or something like that. But certainly this is a very huge investment and we are not in a position to put that money into the solar grid. So there might be different solutions. There might be different options with us to solve the problem, but certainly this may not be feasible in terms of cost and benefit. So for each benefit, for each options we have, we would conduct the cost and benefit analysis. So this is called evaluation of the available options. And then next would be compare the options. Now, in terms of cost and benefit, we have already discussed about the net present value, the return rate of return, the internal rate of return, the average rate of return, and many other things like payback period and the break-even points and so on. So we discussed many options that when we are going for the financial evaluation of the projects, we exercise different kind of tools. And based on that, then we compare these options, and finally we select the best available option. So decision-making process is basically the process of understanding the context, defining the problem. आपको ये slide नजर आ रही है? Can you see the slide? Yes. Achha, thank you. So you define the problem, define the objective, diagnose the problem, develop the alternative solutions, evaluate the alternatives for its cost and benefit, and then you ultimately select the best available alternative. Now, the best would not mean that something which is having a good return. It would also depend on the investment you can do for that alternative. As I have mentioned, that the solar solution may be very best for the KIU, but we don't have the money. We don't have the money to put 1 billion or 2 billion into a one megawatt system in the KIU. So certainly this option may be very feasible somewhere in Europe and America, but maybe not very feasible for us in Gilgit-Baltistan because we don't have the amount we can invest into this option. So we will, once the best available opportunity would be selected, that's implemented, and once implemented, then we get the feedback. The feedback is really very important, that whether the solution has addressed the problem or not. We brought the smart meter system in Gilgit locality. We brought a lot of good things in the power sector, but certainly it's very important to assess that whether the options which we have exercised as a decision, whether the objectives of
problem solving or problem have been achieved or not. So if you just look at the third step, that we define the objectives, that, for example, if the objective of the project is to reduce the line losses in the power system of Gilgit, that is a very clear objective. And if, for example, at current we have, I don't know, but as I understand, the power losses in Gilgit must be very high. It must be around 40 or 30%, maybe much higher than the country. The country power losses are in the range of 20 to 25%. In some areas, these are 50%. And I think in Gilgit, Baltistan, these power losses are also very high. The reason may be due to the very outdated kind of transmission systems, the bad weather, certainly when there is snowfall, there is always tendency of power losses. The maintenance is a big issue. So these are the different issues which can lead to high power losses in the Gilgit-Baltistan. And the lack of modern technologies, for example, can be another big challenge. So all these challenges we have in mind, and we want to define the objectives. For example, if the objective of this decision is to reduce the power losses by 25% or 20% or 15%, that is one objective. The second objective would be definitely to improve the returns and improve the income or revenue of the power department or power systems in GB. That can be another objective. The third objective may be to provide consistent and reliable power to reduce the outages and load shedding hours. So we define all these objectives while we are identifying the problem, and then we try to see that what can be the available options, and then we evaluate the options in terms of cost and benefits, available resources, and then we compare them, and finally we select the best one, we implement that, and we try to see through a feedback system that how this solution which we have implemented is going to solve the problem. Now, when we talk about the decision making, there is always a decision involved. For example, if I put 100,000 rupees in the bank, and bank gives me 20% per year, simple interest or simple markup, I'm sure that after 1 year, I'm going to receive 120,000 from the bank. So it's a very clear and very one available outcome, and I'm very clear about that once the 1 year is completed, I will go to the bank, and the bank will give me 120,000. 20% would be the markup for my investment. This is called normally certainty situation. And certainty situation is a situation where you have a very distinct and unique option. For example, as I mentioned, that if I'm investing the endowment fund of university in a markup 24% per year, being the highest markup tendered by one of the banks, then I'm sure that after 1 year, if I invest 300 million with the bank, I'll be getting something like 75 million as a return. So this is very easy to calculate, and based on that, we can forecast our financial performance. But many times, it's not very easy to say that we have only one option. For example, if I can think about investing this money in the stock, I can buy the real estate, I can go to the bonds, and I can go to the buy the government securities. So there are many options now in my front. Besides investing this money into the bank, now I have more than one options. I don't have the only. So when there is certainty, जब हाँ यकीनियत हो या यकीनी सूरत हाल हो, तो उस सूरत में हमारे सामने एक ही रास्ता है. आपको पता है कि अगर मैंने if I travel to Islamabad and I travel to Chilas, I have the only one route, and that is route chahe wo acha ya bura hai. I don't have any other options to go to Chilas except I will pass this difficult terrain of Tatapani and all these difficult times. But if you have two options, for example, if you are going to Islamabad and you say, okay, the one option is KKH and the other option is Babu Sar Top.
Now, for both, you have some benefits and costs. So in this particular case, now the option is not one. Now we have two options. And maybe somebody tells you that why don't you go by going to Shindur, and always I traveled to Shindur and Chitral and then onwards to Dir and Peshawar and Islamabad, but certainly it took me around 24 hours. So now the options are more than one. So in uncertainty, then how we define the risk? Risk को हम किस तरह define करते हैं? What is risk? जी. What is risk? जी. कोई आप में से, can anyone in the class comment on what is risk? मैंने तो आपको बात की ना कि options are the results can be more than one. So situation is now not certain. जी, what is risk? What is risk environment? सर इसको अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, लेट्स से अगर हम बैंक में अपनी मनी बुक करते हैं तो उसमें हमें जो प्रॉफिट मिल रहा होता है वो मिनिमम होता है, लेकिन रिस्क भी कम होता है। इवन अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाते हैं तो उसमें हमें जो रिटर्न मिल रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा। Okay, so when we have more than one options, certainly then we have risk also. For example, there might be situations that if you buy the stock from the stock market and the financial health of the country is good, there is chances that you may earn more than the bank, but there is always a risk. So in risk situations, we have more than one available options. And for each options, we have some benefit and cost. And for each option, we have some probability of benefits and costs, because we cannot be certain that if I put the money into stock market this year, I'm not certain whether I will be getting the profit more than the bank or not. So there is a risk. So when there is always a probability of both in gain and loss, the risk comes. Because in certainty situation, you have more like gain, and the gain is very clear from the first day, and you are not worried about the gain or the profit. But if you go for more than one one options, then every option has got its own risk. So risk is certainly a situation in which we have more than one options to solve a problem, but every option is its own probability of success and failure. हर ऑप्शन का, मिसाल के तौर पे मैंने आपसे के सामने रखा कि मेरे पास स्टॉक का एक ऑप्शन है, लेकिन मुझे पता है कि there is very limited chances that the stock would perform, maybe not more than 30% that the stock would perform good. Maybe 70% is the chances based in the current economic situations that the performance of the stock would not be good. I buy the real estate as another option. Again, I'm not sure that whether I'll be getting more returns from the real estate or not, because it would again depend on the market situations. So when we have more than one options, and for every options we can assess the probability of success and failure, this is a risk situation. So risk is normally thought as a negative thing in the projects, which can affect the objectives of the project in terms of cost, quality, scope, and time. So any situation or any condition which can badly affect the objective of the project in terms of quality, scope, time, and cost, that is called a risk situation. And the opposite to the risk is opportunity. So opportunity is opposite. There's a positive situations. For example, if the weather is good and the snowfall is delayed, you have more working season, you have more working days. You would try to exploit this time to make sure that the productivity of the work is improved. So the opportunity is a positive environment which can help to improve the project performance in terms of its
time saving, cost reduction, quality improvement, and scope control. So these are opposite things, but certainly we, in a principle, we try to mitigate or reduce the risk. So, for example, if there is a chance of accident in traveling in the night, to mitigate this chance or this risk, you may travel early in the early hours, maybe before sunset, or maybe early in the morning, because we try to mitigate the impact of this event. For example, if there is any accident or any rock falling or slides, which can barely impact the health of the driver and the occupants in the car, then certainly we will try to see that how can mitigate. So we try to reduce the impact of the risks. That is called mitigation. So mitigation is basically all processes which we adopt to reduce the impact of the risk or the negative impacts of the situation is called mitigation. So we may not be altogether eliminating the risk environment, the projects, but certainly through a better project management, we would be able to mitigate or reduce the impact of the negative impacts of the situation on projects. For opportunities, for instance, we would like to exploit the, so mitigation ka opposite exploitation aa gaya, that we will try to mitigate the risk and enhance the opportunity or exploit the opportunity. For example, मैंने example दिया that if the weather is good and the snowfall has been delayed, you have some extra hours of working. You would try to see that the external, at least the building work is completed. And that is what we normally try, that before the snowfall, we try to make sure that the main structure is completed, because later on we can have the plaster work and other work inside the building, which is not very impacted by the bad weathers. So if you have a favorable situations, which is opportunity, then certainly would try to see that we can avail or enhance or exploit this positive situation or positive opportunity. So we discussed the certainty, which is the situation where you have only one and distinct outcome, like investing in a being. The risk is more than one options, but outcomes are options. But we can give some probability to each option in terms of benefit and cost. And the third situation can be uncertainty. Uncertainty is this, like in our country, I was just discussing last night with my younger brother who's in Canada, he's in Alberta, Calgary, and he was really very worried about the dollar prices, because he said that I told one of the dealer to buy some dollars, because he's investing in a new kind of business in Canada. He's the youngest, but he's the most entrepreneurial also in the family. So he told me that he is not in a position to get a quote from the currency dealers, and they say that the dollar value or the dollar conversion rate is changing on hourly basis. Now, this is a very uncertain situation, because you cannot fix something. You cannot have a probability that whether the dollar would be 230 tomorrow or it will be 220 tomorrow. So this is a situation which cannot be predicted, which cannot be, for which you can't have any probability. So the uncertainty is a situation where you have more than one options, but you cannot predict based on some probability or based on some experience. You cannot predict, and that is the situation which we are facing now. This highly uncertain economic situation in Pakistan. God forbid, Allah apna raham kare, but definitely it is a very difficult situation. And you would, I mean, you won't believe that in the market there is a complete stagnation. Nobody is buying something, nobody is selling something. Everybody is just precarious and careful, and they are very, very closely watching what can happen to the market next day. So we decided, we defined three fundamental principles, that decision making, we try to understand the context, we try to understand the problem, we try to understand the objectives, we try to understand the available opportunities and options, we try to evaluate these options in terms of cost and benefits,
and then we may compare them and select the best one, implement that, and then we would like to see that how the problem. Every solution you select may not be able to solve the problem 100%. This is human solutions. Definitely there will be some imperfections, there will be some shortcomings. So certainly you will not be able to solve all the problems of power in Gilgit-Baltistan in one day or in 1 year, but certainly a best decision would mean that you have addressed the majority of the problems or major part of the problem. For instance, if 70 or 80% of the people are having a reliable power for more than 12 or 15 hours, that we would say that is a good solution. So the solution may not be perfect. It cannot be perfect. All problems cannot be solved with one solution, or one solution cannot solve the entire problem. Now, risk management, coming to the lecture, risk management process is basically the process to mitigate the risk of projects in terms of cost variation, time delays, quality, and scope. So we try to identify the risks and then try to see that how can we mitigate these risks so that the project is neither delayed. क्योंकि मैंने पहले दिन आपको कहा था कि our project dashboard is triple or quadruple constraints, and that is the dashboard before us, like a vehicle dashboard. That as a project manager, we would like to see that the cost is not increased beyond permissible limit, the time is not increased beyond, the delay is not unprecedented and very long, and the scope is not very changed extensively, and then the quality is achieved. So we have all these 3 or 4 fundamental constraints in our mind, and then we try to see that what can be the different risks and how can we mitigate and reduce these risks so that we cannot have the project health is not affected. So there are 5 or 6 processes, sub-processes. The first is to identify the risks. For every project, there can be different kind of risk. So we can have different kind of risk for different projects in different areas. So the first and the most important is the identification of risks to the project. हाँ जी, अब इस पे थोड़ा comment अब करेंगे. How to identify the risk? For example, there is a project of the GB government to have the Shontar Pass road to the Kashmir and onwards to Islamabad, for example. This is a mega project, I think 5 or 8 billion rupees, and there are a lot of risks. So how would the first thing is, how would we identify the risks which can be faced in this kind of project? It's a mega project. हाँ जी, इस पे बताएं. How would we identify the risks? How to identify the risk in the projects? हाँ जी, कोई भी मर्द मुजाहिद आ जाए ना आगे. हाँ जी, how to identify the risk in the projects? सर ये प्रोजेक्ट की सर आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे जो रिस्क हम आइडेंटिफाई करेंगे सर, उसमें सबसे पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इसमें सर सोशल फैक्टर हो सकता है, जिसमें एक्विजिशन ऑफ लैंड के हवाले से आपको रिस्क आ सकता है ड्यूरिंग एक्विजिशन ऑफ लैंड और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट. दैट मे बी द मेन हर्डल और रिस्क फॉर कंप्लीशन और एग्जीक्यूशन. अच्छा, ये जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये कहाँ से आपको पता चल रहा है? ये आपकी एक एक्सपर्टीज है ना, आपका एक एक्सपीरियंस है. सोशल सर जो आपके सोशल जो आपके है सर, इसमें जाहिर ये एक फैक्टर तो है जिसमें रेट्स का इशू आएगा, पॉलिटिकल इसमें मतलब तो ये जो आप बातें फरमा रहे हैं, बेसिकली ये आपका अपना एक्सपीरियंस है या किसी और का एक्सपीरियंस? तो पहले तो ये है कि आइडेंटिफिकेशन जो है उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करें, उनसे पूछ लें. ये भी हो सकता है. इसमें मुख्तलिफ सर ये एक्सपीरियंस बेस्ड है. इसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग. इसको हम क्या कहते हैं?
brainstorming. Brainstorming ये है कि we collect the experts. For example, if I'm the project director, I'm the executive director of your department. The first thing I would like to see, I will collect the senior engineers and sit with them and try to see that what is their opinion about the possible risk in the project. Aji. पर रिस्क जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मुख्तलिफ सर्वेस के जरिए कि उस एरिया का सर्वे करें, आप लोगों के इंटरव्यूज ले सकते हैं, आप सिमिलर स्टडीज जो हैं वो पहले से कंडक्ट की हुई उस हवाले से वो देख सकते हैं, आप सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो इससे पहले हुए हैं उस इलाके में उनकी असेसमेंट कर सकते हैं, कि वो सारे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो फैक्टर्स हैं आपके प्रोजेक्ट के रिस्क के लिए। बिल्कुल. So you can the first thing that you can collect the experts from similar projects and you can have a brainstorming and you can see that based on their feedback you can identify maybe 10 or 15 major risks. The second, you discussed that there can be a primary data. You can have a survey. You can go to the community, to the people, and you can conduct a survey, maybe home to home, maybe person to person, and based on that survey, you can collect some data about the possible risks. You can even interview the experts. That is another way. Interview is another technique that we try to see that how the experts are having apprehensions about the various risks. Then we have brainstorming I discussed. Then we can explore similar projects in the past, and we can see that how these for example, if we have a tunnel projects somewhere in Atabad, then we can see that how this new tunnel project can have the different risks. So there are a lot of techniques. There is a focal group discussion or focus group discussion in which we bring the experts, normally 4 to 5 people, and these 4 to 5 people are expert, maybe a chief engineer, maybe a consultant, maybe a senior engineer. 4 or 5 relevant people are brought in a discussion, and normally this is a 1-hour discussion, and there is a facilitator, there is a note taker, and then we place this problem before them, and within 1 hour or so we try to see that how they are identifying the different risks in this project, and then we can less down this risk. So once we do any such tool, then we develop the risk register. So the risk register is a document which has the all possible identified risk in the project. Maybe by the end of the day we come up with 25 risks which can be faced by the tunneling project in the Shontar Valley. That can be a risk assessment. Sometimes we in a brainstorming we face the issue कि for example अगर मैं बैठा हुआ हूँ being vice chancellor और आप मेरे student हैं, तो हो सकता है कि आप मेरे सामने कोई ऐसी बात करने से गुरेज करे being an elderly person, तो फिर brainstorming में थोड़ी बायस आ जाती है, तो उसके लिए बाज़ औक़ात हम डेल्फी टेक्निक करते हैं. डेल्फी टेक्निक जो है DLPHI, डेल्फी टेक्निक जो है बेसिकली brainstorming ही है, लेकिन वो brainstorming is basically the name of the person who is giving the comment or suggestion is not shown publicly, and we try to see that we get their confidential feedback, we announce it without showing their names, and then we try to see that how the people respond to it, and finally we conclude in a decision. For example, Delphi technique कि अगर हम इस वक्त एक Delphi technique क्लास में करना चाहते हैं कि जी what are the 5 major causes of आप अपना एक पेपर ले लें, पेपर just to have a quick exercise of Delphi, एक अपना पेपर ले ले, don't write your name, इसको अलग करें अपने उससे, क्योंकि I would like that the class is आपका जो CR है वो इसको administer भी करे. Write down the 5 major causes of project delays in Gilgit-Baltistan. This is a problem. Problem क्या है? That the project delay हो रहा है गिलगित-बल्तिस्तान में. तो 5 बड़े मसाइल आपके जहन में क्या है? Please write it down without looking at each other. Just have your own intuition and experience that what are the 5 major
causes, don't write your name. What are the 5 major causes of project delays in Gilgit-Baltistan? ये आप लिख के फिर बता दे, और ये जो है आप अपने सीआर को सारा दे दे. Give it to your CR. Your CR is at the moment facilitator only. हाँ जी. ओके, हो गया तो अपने सीआर को दे दे. इट इज अ स्मॉल एक्सरसाइज. अब आपका किसी का हमें पता नहीं है कि किसका क्या जवाब है. हम आपसे ये जवाबात ले लेंगे. 5 major reasons in my opinion which lead to the delay in projects in Gilgit-Baltistan. 1 2 3 4 5. ये सीआर साहब आप इकट्ठा करें. हाँ जी, इट शुड नॉट टेक दैट लॉन्ग टाइम. ये इकट्ठा करे सबसे करे. सीआर साहब, please collect all the responses, come to the rostrum and announce it one by one. We don't have the name of the respondent. नाम नहीं लिखना है ताकि हमें पता नहीं चले कि ये बात किसकी है. पेपर पे नाम नहीं नाम लिखना है, because it is impersonal. It is impersonal. चले सीआर साहब, आप रोस्टम पे आके 1 by 1 पढ़े. 1 by 1 पढ़े. सर, जो फर्स्ट पेपर मेरे पास है, इसमें जो पहला जो काज है वो लिखा हुआ है, नॉट प्रॉपर जस्टिफाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट. सिलेक्शन की बात. आप पढ़ते सेकंड है जाए. पुअर कास्ट कंपोजिशन. डोंट एक्सप्लेन, जस्ट रीड आउट. जो उन्होंने लिखा है वो आप पढ़े. Unnecessary addition of items in the project, less returns, less releases or finances, poor engineering. Next अगला paper है पढ़े. सर, अगला पढ़ते जाए. improper design and drawing, defective estimates, improper allocation of releases of funds, non-requisition of timely lands, availability of lands, social and political disputes, weather condition. Next is cash flow issues, poor technical and administrative management, socio-political interference, poor selection of tender process, identification of a project, poor socio-technical and economical feasibilities. And next is rugged water conditions, demand and supply of material, compilation, PR's interest. Yeah. Recon forms are not involved. Poor project feasibility, cuts and unfeasible allocation. ऑनर्स के इश्यूज है. अच्छा, नेक्स्ट पर जो मेरे पास है सर, तो वेल्थ
whether whether harshness, acute time. आपकी वॉइस बंद है सर. Weather conditions. What are the weather conditions? Poor feasibility. Time. Timely releases. Lack of skilled professionals. Poor execution plan. Political interference. Delays of funds. Administration issues. Non-technical staff. Social and sectarianism. Alano, may tarpayo tumi siya sa atin kaya no. बोलते जाए सर, बोलते जाए ना. अच्छा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, मैं समझा. Lack of commitment, political reasons, regional biases, lack of vision, lack of technical expertise, biasness, corrupt practices, lack of interest from people, less resources. जी जी. Provision of funding, legal issues, weather conditions, poor feasibility studies, non-availability of material due to long access, political interference in project awarded on the basis of religion, properly not assessed, focus on one group, incompetent project managers, lack of funding, political uncertainty, incompetent contractors, unstable political situation, law and order, natural disasters, political instabilities, society, community, political issues, weather environment, infrastructure, availability of social skill labor, local skill labors, availability of material and land in market, land divisions, involvement of employees in corruption, harsh weather, shortage of funds, legal matters, shortage of labor, transportation issues, political issues, inflation, environmental dispute, remoteness. चले, थैंक यू वेरी मच सीआर साहब. ये हमने एक राउंड किया, एक राउंड जस्ट टू गिव यू दैट हाउ वी डू द डेल्फी टेक्निक. एक राउंड करने के बाद मैंने आपको दोबारा कहा, मैं इसको करूंगा नहीं बहरहाल, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी डू द डेल्फी टेक्निक. अभी आपके सामने आपने जो 5 चीजें कही थी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई है. मे बी इनिशियली the thing which you thought is very important, now you, based on your feedback from other colleagues in the hall or in the house, you have changed your mind and you may come up with a new set of 5 attributes. तो इस तरह हम सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल करते हुए एक 5 बड़े मसाइल की या 5 बड़ी रीजंस को जब आइडेंटिफाई करते हैं, कंसेंसस इज डेवलप्ड थ्रू रिपीटेड repetitive process so that we can finally come to a consensus. This is called Delphi technique. So Delphi technique में जो एक खूबी हमें नजर आती है वो आपने देखी कि we don't know who has given this suggestion or who has given this response. So maybe even a junior person can give a very good response, but if it is in a brainstorming
where he's sitting with the senior people. He may not be able to explain his viewpoints openly because maybe due to the seniority level or maybe due to some other factor, he or she may not be able to express his opinion openly. But when we go for Delphi technique, which is impersonal, repetitive process to get a consensus from the experts about any risk factors, that is called Delphi. So Delphi is good in the sense that it is unbiased, it is more democratic to come to a final kind of solutions. So once we identify the possible risks to the project, we develop the risk register. The risk register is basically a document which is developed for every project, and all the possible risks which we can face in the project are listed in under unique number that is called risk register. और ये वो तमाम उसकी एक रिस्क डायरेक्टरी भी बनती है कि डायरेक्टरी मीन्स दैट फॉर एग्जांपल when we say that financial problem, what we mean by it, when we say weather problem, what we mean by it, when we say law and order situation, what we mean by it. So there is a directory and there is also a dictionary. जब हमारे पास, let's suppose, इस project को जो हमने अभी discuss किया, we identified 25 रिस्क हमारे सामने आ गए. वेदर का रिस्क भी आ गया, कास्ट का रिस्क भी आ गया, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल issues, ethnic issues, maybe other many issues like problems we are facing quite often in Pakistan and Gilgit-Baltistan. So we have come up with a list of maybe 20 or 25 risks which we can face in this project. The third step would be, or the second step would be ranking the risks. That we qualify or rank the risk from very high, medium, and low. So this is called qualitative analysis. This is called qualitative analysis. Is basically once the risks are identified, then the risks are categorized in different categories from very high to very low, based on our experience, based on some qualitative analysis. Qualitative analysis would mean that we don't have a lot of calculations, but certainly we have some system through which we can categorize the risk from very high to very low. So this qualitative analysis is done, and we, for example, हमारे पास 25 risk factor आए और हमने जब qualitative analysis किया, और qualitative analysis में हम दो चीजें देखते हैं. एक तो ये है that the qualitative analysis is a function of two things. The first is कि इस risk के वाक़े होने की probability कितनी है. What is the probability or likelihood of this risk to happen? So this is the first factor. The second is what is the consequence of this. तो दो चीजें जब भी हम risk को categorize करेंगे, we try to see two important attributes. The first attribute is the probability. For example, if there is a rain, there is a high probability that slides would, if there is a heavy rain and you are traveling on KKH, there is a high probability that slide may come or there might be some flood. So the probability is the first factor, the likelihood for a risk to happen. अब अगर खुदा न करे कभी ये स्लाइड हो, तो उस स्लाइड की वजह से क्या consequences आ सकते हैं. So the second factor would be consequence or impact of the risk. So अगर मैं probability को 1 से 5 में डिवाइड करूं, काइंडली इसको जरा आप लोग समझे. एक ये है कि वेरी रेयर यानी जिसकी probability बहुत कम है, उसको मैं 1 फिगर दूं, और 5 को मैं वेरी सर्टन कहूं, तो दरमियान में 2, 3, 4 भी आ जाएंगे. एक एक्सट्रीम पे मेरे पास वेरी रेयर के बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि स्लाइड हो जाए, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी 5. तो इसको हम, अब हमारे पास इसकी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं थी, लेकिन बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस वी सेड कि अगर 1 घंटा बारिश हो जाए तो मुमकिन है कि इस्लामाबाद में फ्लड सिचुएशन आ जाए. तो
इसकी प्रोबेबिलिटी मैं असाइन करता हूं कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी फ्लड इन दी सिटी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। दूसरी तरफ ये तो मेरी प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड का आ गया, और दूसरी तरफ मैंने कहा कि अगर 1 घंटा बारिश हो जाए तो फ्लड आने के चांसेस 80% है, और फ्लड आने की सूरत में क्या हो सकता है कि हमारे इतने तनसीबात को नुकसान हो सकता है। तो दो चीजें जब भी हम रिस्क, याद रखें कि जब भी आप रिस्क डिसीजन अपनी जिंदगी में करते हैं, आपके जहन में दो चीजें होती है, इस रिस्क के होने का एहतमाल या इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। दूसरी, खुदा न करे, मिसाल के तौर पर आप एक डॉक्टर है, आप एक ऑपरेशन कर रहे हैं और आपने एक ट्यूमर आइडेंटिफाई किया, उसकी बायोप्सी की, अब आप उस बायोप्सी उसको निकालने का डिसीजन कर रहे हैं, तो आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि इसको निकालने के बाद कितने चांसेस है कि ये मेलिग्नेंट नहीं होगा, इससे कोई कोई कैंसर नहीं होगा। और अगर खुदा न करे कैंसर हो जाए तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी। क्या फर्स्ट जनरेशन कैंसर हो सकता है, उसको हम कीमोथेरेपी वगैरह से ट्रीट कर लेंगे। तो जब भी आप जिंदगी में रिस्क लेते हैं तो आपके सामने दो चीजें बड़ी क्लियर होती है। नंबर वन क्लियर होनी चाहिए कि इस डिसीजन की सूरत में कितनी प्रोबेबिलिटी है और उस प्रोबेबिलिटी का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। मिसाल के तौर पे मौसम खराब हो गया, परसों हम we were sitting in the airport and all of a sudden when the plane was about to land at 8:20 it was announced that the plane could not land and it went back to Islamabad. It was really very worrying for us because there was some problem with the navigation of the plane and the plane couldn't take the risk. Now अगर कोई पायलट ऐसा होता, वो रिस्क लेता कि जी ओके द नेविगेशन इज नॉट गुड बट आई वुड टेक रिस्क टू लैंड and there is a chance, maybe 1% chance, maybe 1 in 1 million chance that if my decision is not correct I may hit the mountain. So the probability of his decision is very less. Maybe कि 1 मिलियन फ्लाइट्स में ऐसा कभी हुआ हो कि वो नेविगेशन खराब होने की सूरत में वो एयरपोर्ट पे लैंड करने की जब बजाय वो किसी पहाड़ से टकराया हो। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंस है उस डिसीजन का वो इतना कैटास्ट्रॉफिक है कि अगर वो ये डिसीजन लेता है तो मुमकिन है कि तमाम मुसाफिर जो है और अमला जो है वो उसमें शहीद हो जाए, मर जाए। तो इसलिए वो इस 1% या 1 in 1000 और 1 in 1 million के चांस को भी अवेल नहीं करता। और वो कहते जी जब नेविगेशन का इशू आ गया तो इस फैसले को करने का इतना बड़ा नुकसान हो सकता था, गो के इस फैसले में शायद जो है गलती बहुत कम हो मुझसे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो कोई मसला नहीं है, मैं तो ऐसा रिस्क लेता हूं, मैंने तो जिंदगी में बहुत सारी इस तरह रिस्क। तो फिर लोगों पे भी डिपेंड करेगा। कोई पायलट कहेगा कि ओके लेट अस आई टेक दिस रिस्क, आई एम नॉट वरीड ऑफ इट। द अदर वुड से ओके आई एम नॉट रेडी फॉर दिस रिस्क बिकॉज इट मे क्रिएट अ बिग डिजास्टर। तो जब भी हम रिस्क एनवायरनमेंट में फैसला करते हैं हमारे सामने दो चीजें होती है। द फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड एंड द सेकंड इज कॉन्सिक्वेंस। अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे मैंने रिस्क का आपको कहा कि जी अगर प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो तो वेरी रेयर, बहुत कम का मतलब से कि 5 से 10% हो तो से ऐसे वेरी रेयर चांस है कि ये मसला हो जाए। और वेरी हाई और वेरी सर्टन ये है कि जी 90% चांस है कि, तो मैं अपनी प्रोबेबिलिटी को 1 से 5 पे डिवाइड करता हूं कि चलिए जी अगर 5 से 10% चांस है तो 1 है, अगर 10 से 20% चांस है तो 2 है, अगर 30 से 40% चांस है तो 3 है, और इसी तरह 41। तो मैंने दूसरी तरफ कॉन्सिक्वेंस कि अगर ये हो जाए, खुदा न करे कोई भी हादसा हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। एक कॉन्सिक्वेंस तो ये हो सकता है कि जी ठीक है छोटा सा स्लाइड हो जाएगा, चांस ये है कि इतना बड़ा स्लाइड ना हो और उससे कोई स्मॉल जो है लॉस या नो लॉस हो। तो मैं कहता हूं कि ये एक है। और बड़ा
कैटास्ट्रोफिक, मैं कहता हूं जी अगर खुदा न करे इस लेवल का हो गया जिसके चांसेस तो कम है, लेकिन कैटास्ट्रोफिक है, सारे लोग मर जाएंगे मेरे इस फैसले से। मैं अगर लैंड करूं एक ऐसी सिचुएशन में जब मेरा नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा हो, या मुझे विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो एंड आई कांट सी दी रनवे स्ट्रिप clearly, there is a chance that I may not hit the strip and I may hit a mountain or may hit some building. So in this situation, though the probability may be very low, but the catastrophic is very high because all the people would die, including the pilot. So the pilot would not take this kind of decision. He may try to return back to Islamabad. So that's why in the aviation, we even a very small risk is not taken, because the result of this risk is very high, the catastrophic. So the consequence may be very, very negligible, like no loss to anybody. आप जब क्रैश लैंडिंग करते हैं तो क्रैश लैंडिंग में खुदा न करे आप बैठे हुए क्रैश लैंडिंग, हम एक दफा थे तो उस पे क्रैश लैंडिंग लाहौर में, तो वहां पे फिर पायलट की कोशिश ये होती है कि अब अगर मेरे पास क्रैश लैंडिंग के अलावा कोई चॉइस नहीं है तो मैं ऐसी लैंडिंग करूं कि मैं डैमेज को, लोगों को पहले और फिर अपने जहाज को बाद में डैमेज कम से कम करूं. So that is called crash landing, in which you try to, first of all, reduce any impact to the people and then to the property. So this decision making in risk environment would depend on many things. आपकी अपनी हैबिट, आपका एक्सपीरियंस, कुछ लोग रिस्क लेते हैं जिंदगी में, कुछ बिल्कुल नहीं लेते. एक सर्जन है, वो हार्ट बाईपास कर रहा है, उसको एक रिस्क सिचुएशन आ गई, वो हार्ट बाईपास नहीं करेगा. वो कहेगा जब तक आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपका ये सारी चीजें नॉर्मलाइज नहीं होंगी मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा. बिकॉज आई कांट टेक इवन 1% रिस्क, बिकॉज अगर खुदा न करे ड्यूरिंग ऑपरेशन आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ और आपकी ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप and then it can kill you. So the heart surgeon would not go for any such kind of decision which will involve any catastrophic situation. So एक तरफ हमने 1 से 5 पे probability को डिवाइड किया, और दूसरी तरफ हमने उसके consequences को जो है, मिसाल के तौर पे मैं आप सबके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं कि कितने % चांसेस है आपकी नजर में कि आपके यहाँ खराब मौसम की वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा. मैं जस्ट एक प्रोजेक्ट के हवाले से खराब मौसम से कितना % चांस है, एनीबॉडी? या 1 to 5 स्केल पे आप बताएं. मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है, वेरी सर्टन, कि मौसम की वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा. कम चांसेस है, कोई चांस नहीं है, तो 1 करे. दरमियान में क्या वैल्यू इसको आप देंगे? कोई भी जस्ट अगेंस्ट, कोई भी बंदा कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप में से कौन प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अच्छा जी, आपके पास कौन सा इस वक्त बड़ा प्रोजेक्ट है? जी, बड़ा प्रोजेक्ट किसके पास है? बड़ा प्रोजेक्ट किसके पास है? से 1 बिलियन का कोई प्रोजेक्ट है किसी के पास इस वक्त? अच्छा, आपका एक प्रोजेक्ट है, आप कितने चांसेस है कि आपके प्रोजेक्ट की कास्ट रिवीजन हो जाएगी? 1 to 5 पे आप मुझे बता दें. व्हाट इज दी 1 to 5 स्केल पे आप बता दें कि व्हाट आर दी चांसेस? 4. आपका मतलब ये है कि यू थिंक दैट देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट कास्ट वुड बी इंक्रीज. ठीक है जी. अब मैं कहता हूं कि ये आप इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? प्रोजेक्ट कास्ट इंक्रीज होगा by 5%, by 10%, by 15%, maybe 40%, maybe more than 5. तो मैं
एक 1 to 5 स्केल रखता हूं और आपसे पूछता हूं कि आपकी नजर में कितना % इंक्रीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 20%। तो 15 तक अगर है तो हम कहते हैं चलिए ठीक है, 20 है तो दिस कैन बी 3 या 4, 1 or 2, 1 is 5%, 2 is 10%, 3 is 15%, 4 is 15 and more, 5 is 25%। मैं वैसे एक एग्जांपल देता हूं। तो आपकी नजर में 4 चांस है कि ये 4 मैंने वैल्यू दे दिया कॉन्सिक्वेंस को, विच इज इंक्रीज इन प्राइस, और 4 मैंने वैल्यू दे दिया प्रोबेबिलिटी को। आपने कहा देयर इज हाई चांस दैट द कास्ट वुड इंक्रीज और द कास्ट वुड इंक्रीज बाय मोर देन 20%, तो आई गिव। तो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास 16 आ गया। दिस इज द 4 multiplied by 4, this is the product of probability and consequence। तो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हम कहेंगे कि यार जिन प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट 12 या 12 से ज्यादा है वो हाई, अगर वो 10 और 12 या 8 और 12 के दरमियान है तो ये मीडियम रिस्क होगा, और अगर वो 10 से कम है तो ये लो। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो हम अपने एक्सपीरियंस पे देखते हुए क्वालिटेटिवली एनालिसिस करते हैं कि हाई रिस्क इन 25 में हो सकता है कि हाई रिस्क 5 हो, मीडियम रिस्क 8 हो, और बाकी रिस्क आपके लो रिस्क हो। तो दिस इज कॉल्ड रैंकिंग ऑफ द रिस्क। जब हम ये रिस्क एक दफा कैटेगराइज करते हैं, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन से रिस्क है जो हम एड्रेस करना चाहेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी वेरी लो रिस्क की कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं है, ऐसा रिस्क आ जाएगा तो हम हैंडल कर देंगे। मीडियम रिस्क भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर पे डालें, कुछ खुद बर्दाश्त करें। लेकिन जो हाई और वेरी हाई रिस्क है उनको मैं जरूर देखना चाहूंगा डिटेल में कि उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर there is high chance of the project cost increase and the increase can be more than 20%, then what can I do in time before the project is started, or we can develop a mechanism in which we can reduce this impact। तो वो जो हाई और वेरी हाई जो रिस्क है उनको हम फिर 3rd स्टेप या 4th स्टेप आ जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हमने सबको नहीं करना है, 25 में से 5 या 10 या 8 हमने कहा कि ये वो रिस्क है जो वेरी हाई है या हाई है, जिनको हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। तो द 4th स्टेप वुड बी क्वांटिफिकेशन और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट रिस्क। अब इसमें हम क्वांटिफाई करेंगे कि जी अगर ये सिचुएशन आता है तो हमारा प्रोजेक्ट कितना % इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो फंडिंग कहां से आएगी, फंडिंग नहीं आएगी तो क्या स्कोप को हम चेंज करेंगे। तो ये सारा क्वांटिफाइड एनालिसिस हम करेंगे हर रिस्क फैक्टर के लिए जो बहुत हाई है या वेरी हाई है, और उनके लिए हम वी विल उसके अगला जो स्टेप होगा दैट विल बी डेवलपिंग द रिस्पांस प्लान। कि हर रिस्क के लिए हमारे पास, मिसाल के तौर पे अगर खुदा न करे पायलट को ये एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो लैंड करे, और लैंडिंग उसको एक अनसर्टेन सिचुएशन में लैंडिंग करनी पड़ रही है, तो रिस्क रिस्पांस क्या है, किस तरीके से वो लैंड करे कि वो लोगों की जिंदगी और जहाज की को तबाही से बचाए। तो दैट विल बी द रिस्पांस प्लान फॉर एवरी रिस्क which is very high or high, we would develop a response plan. So that is called developing the risk response plan. So for every risk we identified, quantified, we will develop a response plan. And once this response plan is developed, we implement it. जब project तो ये जो अभी तक हमने 4 चीजें की, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क रैंकिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड डेवलपिंग द रिस्पांस प्लान, ये 4 हमारी प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा है। किसमें है ये? हमने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले प्लानिंग में ये 4 चीजें की है कि रिस्क क्या है, उन रिस्क की कैटेगरी क्या है, हाई रिस्क कौन से, लो रिस्क कौन से, मीडियम कौन से। फिर उनको हमने क्वांटिफाई किया कि अगर ये रिस्क आएगा तो उसको किस तरह हम मिटिगेट करेंगे, उसके लिए हम रिस्पांस प्लान बनाएंगे।
और फिर उसको, तो ये 4 तो हो गए प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा। जब हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो वी विल इम्प्लीमेंट, जो 5th हमारा स्टेप है, दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द रिस्क रिस्पॉन्स प्लान। जो हमने प्लान बनाया है मुख्तलिफ किस्म के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उनको हम क्या करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी करेंगे। तो हमारे पास 6 या 7 स्टेप आ गए रिस्क मैनेजमेंट में। द फर्स्ट स्टेप वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, the second was qualitative analysis, the third was quantitative analysis, the fourth is developing the risk response plan, the fifth is implementing the risk response plan, and then monitoring and controlling. जब हम रिस्क को कंट्रोल करेंगे तो कुछ नए रिस्क आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा ना कि हमारी बिल्डिंग को लोगों ने जला लिया। अब ये रिस्क तो हमने अपने रिस्क में कहीं पे भी नहीं लिखा था, ना हमें कभी ये जहन में आया था कि कुछ लोग उठ के हमारी बिल्डिंग को, तो उस तरह ये अब अनसर्टेनिटी सिचुएशन में हम आ गए। उसको भी हमारे साथ कोई प्लान होना चाहिए कि अगर खुदा न करे अचानक जलजला आ जाए, अचानक फ्लड्स आ जाए, उसके लिए शायद हमने कोई हमारे जहन में ना हो और हमने कोई रिस्क प्लान भी नहीं बनाया हो, लेकिन अगर वो आ जाए तो देयर माइट बी सम न्यू रिस्क व्हेन वी आर डीलिंग विद द आइडेंटिफाइड रिस्क्स। There are chances that we come up with a new risk, and these new risks are not already viewed or reviewed, and then certainly we will be trying to see. तो इधर हम एक ब्रेक करते हैं, इसके बाद फिर दिन we will start the with the slides. Thank you very much. Thank you very much. Okay, we also discussed, there is some echo, I don't know what is the problem. Okay, it's fine now. आवाज आ रही है आपको? In the beginning, we discussed that there is high risk and high return. Certainly, when we take the risk, the return may be very high. For example, if we invest in the stock, there is high chances that we will get money, which is more than the bank return. But certainly, there is also a chance. So the basic principle is that there is always high risk and high return. So if you just look at the curve, which is on the vertical, you have the risk, and on the horizontal, you have the revenue. This is just telling us that when you go for high risk, there is always a chance that, but there is no certainty, but there is chance that you will get a high return. For example, if you just look at the various options of investment, like if we have a cash in hand, there is no risk because the cash is available to us. There is no return. For example, there might not be very big return of holding the cash, and there might be some interest you can get in bank. The second option, the fixed interest, that you go to the bank and you may invest this money for 5 years in a fixed return. Now, in this case, you can have the medium risk because the markup rate may increase with time. So there is always a risk. Lekin the return is higher than the cash because if we just keep cash with us. And the long fixed interest, normally we go for 3 to 5 years because you cannot compare the return of 1 year with the fixed investment. Another, for example, if you go for property investment, this is again a medium risk, and the return can be sometimes better than the fixed interest in the bank. And you can get either the rent, for example, if you are leasing this property to someone on rent, and the other can be capital growth, that the cost of the price of the plot can increase. I bought a plot at 7 million 3 years back. But now the price is even less than 5 million. So this is there is always some people advise me to keep it for another maybe 3 to 4 years.
but since I need some money for my brother, so I decided that I should dispose of, and there is a loss of about 2.2 million. So there is always a risk of loss in property also when the market is not stable. Another is shares that you invest in the stock. There is a high risk because the stock, हमने एक ज़माने में स्टॉक लिए और जो 1,000 का शेयर लिया था वो एक वक्त में 10 रुपए का या 100 रुपए का हो गया. So there is always a high risk that the stock may crash, as we are witnessing currently in the country. Returns are high because if the situation is good, the economic conditions of the country, लोगों ने stock exchange में अरबों रुपए भी कमाए हैं because of the increase in their share prices. The interest is dividend, which is the profit on the shares, which is called dividend. Or there might be capital growth के जो dividend shares है वो आपको shares में convert करें. मिसाल के तौर पे National Investment Trust में मैंने थोड़ी investment की है, तो what they normally do that they the dividend which they declare that is further invested as a capital growth, and they give you new shares. And normally the stock return can be assessed in 10 years or more. So you can't say that in stock you will be able to earn good money in next 3 to 4 years. You have to wait for 10 to 15 years to see that. So that is normally the share investment or stock investment is highly risky, but it should be, you should wait at least 5 years or 10 years. I will quick, for example, this is just an example that what can be the family risks. There are price risk like inflation. There will be environmental risk like we have. Then there are 5 R's, for example, 5 D's: death, disability, disagreement, divorce, disaster, production risk, the family risk. So these are some of the risks which we normally have with the family. If we really want to have a healthy, successful family, there are risks. There are some financial risk, legal risk, and all these are just an example that how the family life can have some risks. So sir, ये start करें. Who will read it? आप जरा podium पे आ जाए ताकि मैं भी सुनूं. Project risk management. Project risk management includes the processes concerned with conducting risk management planning, identification, analysis, responses, and monitoring and control on the project. So five or six terms have been defined: planning, identification, analysis, response, monitoring, and controlling. Okay, आगे पढ़े. Risk management planning, deciding how to approach, plan, and execute the risk management activities for the project. Risk identification, determining which risk might affect the project and documenting their characteristics. Qualitative risk analysis, prioritizing risks for subsequent further analysis or action by assessing and combining their probability of occurrence and impact. Quantitative risk analysis, numerically analysis the effect on overall project objectives of identified risks. Risk response planning, developing options and actions to enhance opportunities and to reduce threats to the project objectives. Risk monitoring and control, tracking identified risks, monitoring residual risks, identifying new risks, executing risk response plans, and evaluating their effectiveness throughout the project life cycle. Thank you. मैं थोड़ी कॉल लेता हूँ दिन.
Okay, ji, thank you very much. There was a call from my student, so I just wanted to help him in one of his problem. ये 5-6 स्टेप्स पहले हमने इस पे बात की, so I'll not read it out. जी हाँ, सीयर साहब पढ़े सर। रिस्क मैनेजमेंट हमने एक स्लाइड आपके आने से पहले कि ये वो 5-6 स्टेप्स है कि हम रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फिर रिस्पांस प्लान बनाते हैं और फिर मॉनिटरिंग, उसको इम्प्लीमेंट करके उसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये कम से कम आप अपने जहन में ये 5-6 चीजें जरूर, जब भी आप रिस्क असेसमेंट करते हैं तो पहले प्लेन आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है। आप जीबी में रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो एक अलग प्लेन बनाएंगे, आप इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ के अलग कॉन्टेक्स्ट होगी, यहाँ के अलग प्लान्स होंगे, किस तरह आपने रिस्क को एड्रेस करना है, किस तरह आपने रिस्क, तो ये हर जगह की अपनी अप्रोच और प्लान होगा। फिर आइडेंटिफाई करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एंड देन यू विल डेवलप द प्लान एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट इट एंड देन मॉनिटर एंड कंट्रोल। तो ये चीजें हमने की है। अब प्लानिंग पे आते हैं कि व्हाट वी मीन बाय द प्लानिंग। मैंने कुछ बातें बहुत ज्यादा की भी है, बट जस्ट वी विल गो थ्रू द स्लाइड्स। ओके जी, पढ़े सीआर साहब। Risk management planning. Risk management planning is the process of deciding how to approach and conduct the risk management activities for a project. The risk management planning process should be completed early during the project planning, since it is crucial to successful performing the other processes. Planning, meetings, and analysis. Project teams hold planning meetings to develop the risk management plan. Attendees at these meetings may include the project manager, selected project team members, and stakeholders. Anyone in the organization with responsibility to manage the risk planning and execution activities and others as needed. So we discussed, yes, thank you very much. Thank you very much. Tashrif rakhiye. We discussed that the most important part is to plan the risk management, develop the risk management plan, and we have different kinds of tools, like we have the brainstorming, we have the expert meetings, we have the focus group discussions, we have the Delphi technique, we go for the survey analysis, we go for the interviews of the experts, and many other tools we can combine to get finally develop this plan. Now, a typical risk plan would include certain attributes. तो वो जरा आप में से कोई पढ़ ले, अगली स्लाइड पे है कि रिस्क प्लान के क्या कंपोनेंट्स है। These are the components of a typical risk plan. जी पढ़े सर कोई? ये जो खातून है, बच्ची आप आ जाए, पढ़ ले, आपकी इन्वॉल्वमेंट भी क्लास में आ जाए। But I'm happy that at least you are the only lady in the class. सर दो एक और भी है। एक और भी है, वो नजर नहीं आ रही है ना, जरा आपकी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए ना क्लास को। ओके जी, कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान। कोई भी रिस्क मैनेजमेंट प्लान में हम क्या चीजें तलाश करते हैं? चले हाँ जी, पढ़े प्लीज। हाँ, नजर आ रही है। Components of project risk management plan. Methodology defines the approaches, tools, and data sources that may be used to perform risk management on the project. Roles and responsibilities define the lead, support, and risk management team membership for each type of activity in the risk management plan, assigns people to these roles and clarifies their responsibilities. Budgeting assigns resources and estimates costs needed for risk management for inclusion in the project cost baseline. Timing defines when and how often the risk management process will be performed throughout the project lifecycle and establishes risk management activities to be included in the project schedule. Risk categories provides a structure that ensures a comprehensive process of systematically identifying risks to a consistent level of detail and contributes to the effectiveness and quality of risk identification. Definitions of risk, probability, and impact. The quality and credibility of the qualitative risk analysis process requires that different level of the risk, probabilities, and impacts be defined. Okay, thank you very much. आज आप तशरीफ रख के
तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो हम बनाते हैं उसमें हमें एक तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल देयर इज अ टेंडेंसी इन इंक्रीज ऑफ द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, व्हाट अप्रोच वी वुड बी यूजिंग, what will be the corporate approach, what would be the individual project approach, what are the for example the guidelines given by the organization, what are the sources which we will be using for verifying. So once this is done and we define the approach, we need to assign the responsibilities. For example, who will the finance department would try to control the price through better price mechanism, to better cost management, to control. For example, if the university is in a problem and there is a risk that we may not be able to pay the salaries, then what can be the role of the finance and what can be the role of different organization to avoid this risk? So we will assign the responsibility very clearly, and based on that responsibility, certainly then we will be going for accountability also. Budgeting for any risk we need to mitigate, there is always a budget. For example, if we want to have a third-party insurance, so that any person who is working in the project, if he is having any casualty or any problem, then who will pay for this? Is it an insurance, or or we have some budget available in the project for such kind of risks? So normally for environmental risks, we assign the budgets very clearly as per the requirements of the sponsors. But definitely we will also have some budget for the risk mitigation. The timing is very important. That, for example, at what particular cycle in the project and what particular time this risk can trigger, and how can then we try to understand or rectify it. And then the categories I discussed, that how we categorize based on the probability and based on the consequence or result. And then finally, the definition of risk probability, that, for example, if it is very rare, it may be 1, and it very high, it may be 5. And based on that, we can categorize the risk probabilities and the risk consequence or impact. The risk background structure, for example, this is a project and in which we have identified 4 levels of risk. For example, there can be technical risk. This is a software development project. So just like the work breakdown structure, organization breakdown structure, we have the risk breakdown structure also. What we try to do is to divide the risk in different categories. For example, what can be the risk with the contractor? What can be the risk with the site? What can be the risk with the project team? And what can be the risk with the market? So based on these 4 or 5 categories of risk, we then may identify the further. For example, when we talk about the technical risks, there might be problem with the requirement analysis. Maybe the requirement of the user have not been collected very efficiently, and we are facing the problem once the software is developed. There is a technology risk also, because we may be using a platform which is not consistent with the existing platform of the university. So once it is done, then integration issues would come. There is another risk. Complexity and interfaces. For example, when different human and technology interfaces come, the trainings, their development is very important, and we can have the risk there. The performance reliability, that how the performance and the software can be reliable, the information which is provided by the software is reliable in terms of decision making. And then quality, that how the standards, international and national standards, can be met. So these are the risks in technical parameters. Similarly, if we go to the other extreme, there might be project management risk, like estimation may not be correct. Maybe the planning was not well done. The controlling, we have a good plans, but the controlling and monitoring is not very good. There might be some communication issues. We may not be responding to the contractor and to the sponsor in time, and that may create some problems for us. So we, within the project, we categorize the major subdomains and then further subdomains to now just मैंने जो last बात की थी, for example, this is a template which is telling us that if the cost is not increase is insignificant, which is less than 5% of the project estimate, it is a low kind of probability or a low kind of impact. If it is less than 10% cost is increased,
then it is again a low, very low and low. But if the cost increase is between 10 and 20%, it is a moderate risk. And if it cost increases more than 20% and up to 40%, this is high. And if it is more than 40%, it is a high. So based on cost, we can categorize the risk from 1 to 5. For example, a very low risk would be where the cost increases 5% or less. That is the situation where the risk is very low. And if the cost increases more by 80%, then certainly it is more than 40%, then certainly it is. So at the end of the workshop, maybe 2 weeks later, we have a workshop in which all the students, the groups will present their research assignment. This research assignment is mandatory because this involves all the important topics which we have studied in our course. This will involve, the first part is that we expect that there will be a literature review, and this literature review must involve at least 10 to 15 papers, review of ये thoda guideline 10 to 15 research papers का आप review करें और खासकर अपने topic के हवाले से फिर based on that you will write a report और उस रिपोर्ट में आप फिर जो है वो ये चीजें करेंगे, फिर एक प्रेजेंटेशन हम करेंगे। तो ये जो मैं काइंडली इधर जो टेम्पलेट ऑफ रिपोर्ट है और इसी पे ये आपके फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा आपके प्रोजेक्ट के हवाले से, तो ये काइंडली इस पे जरा ज्यादा मेहनत करें। एक एब्स्ट्रैक्ट आएगा, इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 200 वर्ड्स 200 से 250 वर्ड्स का होता है और इसमें हम ब्रीफली हमारा प्रॉब्लम क्या था, उस प्रॉब्लम के लिए जो हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज की, आपने कोई लिटरेचर रिव्यू किया, उसके बाद आपका जो सैम्पलिंग क्या थी, पॉपुलेशन सैम्पलिंग क्या थी, उसके बाद जो मेजर रिजल्ट्स क्या थे, और इसी तरह आपकी रिकमेंडेशंस अगर कोई है तो वो क्या है। तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट में भी आएगा और यही आपका जो है यही आपका बन जाएगा रिपोर्ट का टेम्पलेट। यानी आपका पहला जो पार्ट होगा एब्स्ट्रैक्ट होगा, दूसरा पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, तीसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मसला क्या था जिस पे आपने काम किया, एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपका जो है रिसर्च मेथड क्या था या मेथोडोलॉजी क्या थी, आपने किस तरह ये रिसर्च किया, कोई लिटरेचर रिव्यू किया, आपने कोई इंटरव्यू किए, जो भी आपने किया वो आप इसमें डाल दे। उसके बाद आप जो है मेजर रिजल्ट्स को डिस्कस करें। उसके बाद आपका, मैं जस्ट इसके फॉर्म को थोड़ा छोटा करता हूँ सो दैट यू कैन सी ऑल दी गुड थिंग्स। उसके बाद कंक्लूजन्स आपकी क्या है और फाइनली रिकमेंडेशंस। तो ये आपका जो है एक टेम्पलेट आएगा। एक एब्स्ट्रैक्ट होगा 2 से 250 वर्ड्स का जो टिपिकल रिसर्च पेपर। उसके बाद इंट्रोडक्शन, ये जो है तकरीबन 1 to 2 पेजेस का या 2 पेजेस का मिनिमम। इसके अंदर इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू के ये जो आपका मसला है, इसका प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने क्या यूज की, मेजर रिजल्ट्स क्या है, उस पर अगर कोई डिस्कशन आप चाहते हैं,
conclusions and recommendation, and finally references. कि अगर आपने इसके लिए जो कुछ भी पढ़ा उसके रेफरेंसेस का जो स्टाइल है वो नॉर्मली हमारा जो है, फॉर एग्जांपल, जी हाँ जी, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। इसमें डेटा को क्या मैकेनिज्म, हम सेकंड डेटा यूज करेंगे क्या, इसमें क्या होगा? ये मैं जस्ट एक आपको एक तरतीब बताता हूँ। शाह ए कुद्दूस बी, ये नाम है, लास्ट नेम पहले आएगा, फर्स्ट नेम का वो होगा, एंड सपोज इस्माइल एम, मोहम्मद इस्माइल एम, ये टेम्पलेट है। उसके बाद ईयर आएगा 2022, फिर उसके बाद टाइटल ऑफ पेपर आएगा प्रोजेक्ट डिलेज। वी कांट सी द स्लाइड्स। स्लाइड आपको नजर नहीं आती? वो नजर नहीं आ रहा। लेट मी शेयर इट अगेन। अभी नजर आ रहा है? आ गया सर। ये मैं जस्ट आपको एक टेम्पलेट देता हूं कि किस तरह हम रिसर्च पेपर को रेफरेंस किस तरह करते हैं। उसका तरीका ये, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, ASA जिसको हम कहते हैं, ये एक मैंने लिख दिया, शाह ए कुद्दूस बी, ये 3 ऑथर्स है। फिर 2022 डेट है जिसमें ये पब्लिश हुआ है। टॉपिक उसका है प्रोजेक्ट डिलेज इन पाकिस्तान। इसे मैं एग्ज्यूम करता हूँ, जर्नल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये उसका जर्नल है। वॉल्यूम 22 है और नंबर उसका 2 है, और पेपर पेज या PP पेज 12 से 20 तक। ये एक टेम्पलेट होता है किसी भी जो है पेपर को रेफर करने का या रेफरेंस करने का, कि आप जो है उसके ऑथर्स के नाम लिखते हैं, लास्ट नेम फर्स्ट, देन फॉलोड बाय एब्रिविएशन ऑफ फर्स्ट नेम, कुद्दूस बी, इस्माइल एम, तौल्ला शाह, बिलावल कुद्दूस, मोहम्मद इस्माइल, सो शाह ए कुद्दूस बी एंड इस्माइल एम। ईयर ऑफ पब्लिकेशन ये 2022 में पब्लिश हुआ है। प्रोजेक्ट डिलेज इन पाकिस्तान, ये उसका टाइटल है। जर्नल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जर्नल का नाम है। वॉल्यूम इसका 22 है, नंबर 2 है। ये नॉर्मली साल में एक से ज्यादा उसके आते हैं, वो नंबर आते हैं, तो इसलिए अगर एक से ज्यादा हो तो फिर 1 2 3। बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो हर महीने छपते हैं, तो फिर उनके नंबर भी चेंज होते हैं। पेज नंबर किस से किस तक के, तो ये जस्ट एक टिपिकल द वे यू रेफर टू द रिसर्च पेपर्स इन योर रिपोर्ट्स एज रेफरेंसेस। ये मैं जो है हाँ जी, इसकी आपने पिक्चर ले ली? हाँ, बस ये और ये जो 2 चीजें है ना, बस दिस इज दी, ये 2 चीजें आप ले ले तो ये फिर आप मुझे फिर बता दे, ग्रुप्स भी बना दे और ये उनको कर लो। ठीक है सर? यस सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।